Hello everyone. So today we will start another new chapter, that is chapter 9. Strategies for enhancement in food production. Chapter 9. Strategies and strategies for enhancement in food production. So what are the strategies? Means what are the measures which we have taken, which the cultivators have taken? What are the steps that they have taken to increase the quantity of food, to increase the amount of food, to increase the quality of fruit? ठीक है? So in this chapter, animal husbandry has been deducted. So we'll start from plant breeding. ठीक है? Plant breeding. So what is plant breeding? It is the purposeful manipulation of plant species. Purposeful manipulation of plant species. For what? Why we manipulate the plant? What we need to get a desired plant types. To get a desired plant types which have many qualities within one plant, such as what are the qualities which would be better suited for cultivation, which will be better suited for cultivation, which will give better yield, means which will give more production, ठीक है? Which will be disease resistance, ठीक है? So we need all these qualities in a single plant, ठीक है? So this is the main purpose of plant breeding. So let us take an example. Let us take the example of rice plant, ठीक है? Rice plant. We know rice has different species. Different varieties of rices are there, okay? So different varieties of rice obviously have different nutrients value. Different types of rice have different nutrients values. Then they have different shapes and sizes. जो बॉयल राइस है उसका साइज़ क्या होता है? थोड़ा गोल टाइप, मोटा टाइप होता है, और जो बासमती राइस है, ठीक है, उसका साइज़ एंड लेंथ कैसा होता है? ऐसा लंबा टाइप का होता है. So they have a variation in shapes and sizes. So these are all the stuffs which we have to look into. But despite from this stuff, there are some other qualities which we have to look at. These are how much time the plant takes to grow, मतलब बड़ा होने से हार्वेस्टिंग तक उसका मतलब टाइम पीरियड कितना होता है? कितना टाइम लेता है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ठीक है? व्हाट इज़ द टाइम? नेक्स्ट, टोलरेंस. इट्स टोलरेंस कैपेसिटी against drought. Drought means, you know, lack of water. The earth becomes cracked. So उसका टोलरेंस कैपेसिटी कितना होता है टू फेस द ड्रॉट?
नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस कितना हुआ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो दिस आर ऑन फील्ड प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। बिसाइड्स दिस points, different nutrient values, different shape sizes, we have to look in this property also। मतलब कितना टाइम लेते हैं वो ग्रो करने के लिए हार्वेस्टिंग तक, टॉलरेंस कैपेसिटी कैसा है प्लांट का, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस का मतलब डिजीज से लड़ने की क्षमता कैसा होता है, पेस्ट से और इंसेक्ट से लड़ने का मतलब कैपेसिटी कितना होता है। सो दिस ऑन फील्ड प्रॉपर्टी also we should look into। So now we will see what are the features, हम क्या क्या फीचर्स चाहते हैं एक न्यूली ब्रीड प्लांट में, मीन्स फीचर्स। इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, ऑब्वियसली यही हमारा प्राइम गोल है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड, इंक्रीज क्रॉप यील्ड विथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब अच्छा न्यूट्रिएंट मिले, ठीक है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा हो, उस तरह की क्वालिटी चाहिए हमको, विथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी। देन इंक्रीज्ड increased tolerance to environmental stress, increased tolerance to environmental stress। What are the stress? Drought, rain, high temperature, extreme low temperature, these are the environmental stress। So next, resistance to pathogens, resistance to pathogens, the pathogens may be bacteria, fungi, then many types of viruses। so resistance कितना है पैथोजन से वो भी एक फीचर्स है। नेक्स्ट कम्स उसका इंसेक्ट से लड़ने का क्षमता भी मतलब इंक्रीज्ड होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज देन द नॉर्मल, इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स, इंक्रीज्ड टॉलरेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स। मतलब हमको सब कुछ चाहिए एक ही प्लान में, मतलब 4 in 1 और 5 in 1। Then change in maturity period, change in maturity period, maturity period means अगर एक राइस प्लांट नॉर्मली it takes 8 months from plantation to harvest, so उसको हमको ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड, हमको क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए कम टाइम में चाहिए। सो वी विल मेक अ प्लांट, वी विल कॉम्बाइन सच टाइप ऑफ गुड कैरेक्टर्स, वी विल देन मेक अ क्रॉस एंड मेक सच टाइप ऑफ प्लांट ब्रीड्स दैट विल गिव अ यील्ड अराउंड फॉर एग्जांपल 6 months। जो हमको 8 महीने में मिलते थे वो हमको 5-6 महीने में मिल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन मैच्योरिटी पीरियड। इसका मतलब टाइम पीरियड कम चाहिए हमको, कम टाइम में चाहिए, ज़्यादा चाहिए, विथ गुड न्यूट्रिएंट क्वालिटी चाहिए। सो दीज आर ऑल द फीचर्स दैट वी वांट इन आवर न्यूली हाइब्रिड प्लांट्स, ठीक है। इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड विथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी, समझ में आ गया, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड
मतलब अमाउंट ज़्यादा चाहिए, विथ प्रॉपर विथ मतलब हायर न्यूट्रिशन, इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, ड्रॉट, रेन, टेम्परेचर से, मतलब ताकि वो ना मरे इजीली। देन रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, व्हाट इज़ देयर फाइटिंग एबिलिटी अगेंस्ट द वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। देन उसका टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। देन मैच्योरिटी पीरियड नॉर्मल से हमको कम चाहिए, चेंज चाहिए इन द मैच्योरिटी पीरियड। सो दीज आर द फीचर्स। So now we will see what are the steps that are taken to produce a new breed of plants. Means steps taken in plant breeding. Steps in plant breeding. PB means plant breeding. I am writing in a short form. Number 1, collection of variability, collection of variability, variability. So variability means we will collect different varieties of seeds, ठीक है, जो seeds मतलब with superior quality seeds, collection of superior quality सीड्स, बहुत सारे सीड्स को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे अच्छे अच्छे क्वालिटी का सीड्स एंड मेक अ जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन करेंगे ऑफ सुपेरियर क्वालिटी सीड्स। दे मस्ट पोजेस ऑल द डिजायर्ड alleles, all the good alleles, okay, all the good alleles for all genes, अच्छे अच्छे एलील चाहिए, ठीक है, वो सब सीड्स हम कलेक्ट करेंगे एंड मेक अ लाइक अ सीड बैंक, ठीक है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन करेंगे। एंड एलील्स मीन यू नो दिस इज कैपिटल W स्मॉल w, वन इज कॉल्ड एलील्स, मतलब part of gene is called alleles. Then after collection what we will do, अच्छे क्वालिटी सीड्स कलेक्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे, इवेलुएशन, इवेलुएशन एंड सिलेक्शन, evaluation and selection of parents. evaluation means you know जांच पड़ताल करेंगे, evaluate करेंगे, वो ये कैसा होगा, मतलब क्वालिटी एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। Then after selection, desired combination of characters we will take for hybridization. जो सबसे अच्छा क्वालिटी होगा उस कैरेक्टर को लेके हम कंबाइन करेंगे to get the hybrid plant. This is the evaluation and selection of parents. After that, cross hybridization. Cross hybridization among selected parents. Cross hybridization among selected parents. Hybridization you have already know. Mendel's cross कैसे क्रॉस करते हैं,
क्या करेंगे? डिजायर्ड क्वालिटी कैरेक्टर्स, डिजायर्ड क्वालिटी कैरेक्टर्स we will take, then make a cross, means combine, okay, to form hybrids, to form the hybrids, such as, for example, this is a corn, maize, this is tall, okay, this is tall, but the seed number are few, ठीक है? Corn, this is tall, but seeds number are few, and another one is here short, but it have more and more number of seeds, large number of seeds. So we need both the quality, ठीक है? We need both the quality. We need tall as well as more number of seeds. So what we will do? This plant also has a good quality, good character, desired character, and this plant also has a desired character. Means number of seeds are more. So we will take these two plants and we will hybrid it. Okay? Then we will get what? Tall as well as more number of seeds, दोनों मिल गया, ठीक है? हाइब्रिड, दिस इज द हाइब्रिड. तुम लोगों ने सुना है क्रॉस हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी. हॉर्स एंड डंकी का क्रॉस ओके क्या होता है? म्यूल. सिमिलरली टाइगर लायन मिलके क्या होता है? टाइगोन, ठीक है? टाइगर लायन मिला के टाइगोन होता है. सिमिलरली अगर लायन टाइगर मतलब मेल टाइगर फीमेल लायन, ठीक है? मेल टाइगर फीमेल लायन मिला के टाइगोन होता है. देन फीमेल लायन मेल लायन देन फीमेल टाइगर मिला के क्या होता है? लाइगर. ऐसा टाइप. दीज आर हाइब्रिड्स. म्यूल इज ऑल्सो हाइब्रिड. देन नेक्स्ट next point comes selection and testing. Selection and testing of superior recombinants. Superior recombinants. Selection and testing of superior recombinants. So in this step what they will do? They will self pollinate those plants. They will allow for self pollination for several generation. Why they will self pollinate? So that the good characters remain intact through many generations. Many generations तक वो जो गुड कैरेक्टर लिया है वो इंटैक्ट रहे, वो बरकरार रहे, ठीक है? दैट इज कॉल्ड होमोजाइगोसिटी. होमोजाइगोसिटी. So that homozygosity, the characters does not segregate. अच्छा कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो.
इसलिए वो सेल्फ पोलिनेटेड करते हैं। नेक्स्ट द लास्ट पार्ट आफ्टर सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया। टेस्टिंग में क्या करेंगे, लैब में ग्रो करेंगे फॉर 3 years। लैब में ग्रो करेंगे फॉर 3 years। आफ्टर दैट दे विल शिफ्ट इट टू फील्ड, मीन्स नेचुरल एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड में शिफ्ट करेंगे एंड दे विल सी द रिजल्ट्स। इफ़ द रिजल्ट्स आर ओके, रिजल्ट्स मतलब जो चाहते थे वैसे ही हुआ, अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, देन द लास्ट स्टेप इज release and commercialization. Release and commercialization. Release and commercialization means जो डिज़ायर्ड क्वालिटी सीड्स है वो सीड सेल करेंगे, प्लांटलेट्स सेल करेंगे, देन अल्टीमेटली बिजनेस स्टार्ट करेंगे। So these are all the steps of plant breeding. So we have discussed about what is plant breeding, what are its aims, and what are the characters that the cultivators needed to improve the quality of the crops. What are the features they needed, and we have already seen the steps. What are the steps for plant breeding? Another important topic, green revolution. Question may come, green revolution. What is green revolution? Who have started? It was started by M.S. Swaminathan, M.S. Swaminathan and Dr. Borlaug. These two scientists have came together to bring the green revolution in India. Means they bought a wheat plant species from Mexico to India. ठीक है, this after that they saw that this wheat plant species is capable, this variety is capable to meet the increased demand of food, increased demand of crops in India. ठीक है, वो लाने के बाद देखा this variety is very suitable for India. Its success to meet the demand of crops in India. It's also called, this wheat is called semi-dwarf. Okay, semi-dwarf varieties of wheat, मतलब इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है, ड्वार्फ साइज है। Then in 1963, two varieties of wheat, Sonalika and Kalyan. Sonalika and Kalyan Sona, they are high yielding crops and disease resistance are introduced in India. These two crops, remember the name Sonalika and Kalyan Sona.
Sonalika, the name come from because it's of golden color. ठीक है, golden color. This is about the green revolution. Next we will start plant breeding for disease resistance. प्लांट तो ब्रीड कर दिया, लेकिन क्यों किया? ठीक है, प्लांट ब्रीड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. हम लोग को डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट चाहिए. ठीक है, सो एज वी नो a wide variety of bacterial, fungal disease attack the plants. Various types of fungal bacterial disease attack the plants and destruct the crops and damage crops, which constitute 20 to 30% of the total crop. The destruction constitute 20 to 30% of the destructed crop. So the cultivators now, the agriculturist now decided to use alternative method to increase food production and reduce excessive use of fungicides and herbicides. ठीक है, so for disease resistant plant breeding the technique is same as plant breeding. So let us see some fungal disease. These are important fungal disease. Name of some fungal disease: brown rust of wheat, brown rust of wheat, then red rot of sugarcane. रेड रॉट ऑफ सुगर कैन, हैव ऑलरेडी सीन. सुगर कैन के बीच में थोड़ा रेड आ जाता है, उसको बोलते हैं रेड रॉट डिजीज़. देन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का एक डिजीज़ होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. दीज आर द फंगल डिजीजेस ऑफ प्लांट्स. देन सम बैक्टीरियल डिजीजेस आर ऑल्सो देयर. Bacterial disease, black rot of crucifers. Crucifers, you know, Cruciferaceae family of plants. Watermelon, gourd, this belongs to Cruciferaceae family. They have a disease called black rot of crucifers, a bacterial disease. Another disease caused by virus, tobacco mosaic virus. Then turnip mosaic virus. So among the fungal disease we have known brown rust of wheat, black rot of sugarcane and late blight of potato. Then among bacteria, black rot of crucifers, viral disease, tobacco mosaic virus, turnip mosaic virus. You know the shape of tobacco mosaic virus, it's a bit cylindrical type, the virus. This type.
looks like this type. Tobacco mosaic virus, TMV. It is called TMV. So besides this, another method is there, breeding method, that is called mutation breeding. Mutation breeding. So what is mutation? You know, changes or variation in base sequence. Base sequence of what? DNA. Changes in the base sequence of DNA within the genes, means A, T, G, C, G, C, T, A, G, G, C, like this. This long chain is called one gene, and changes in the base sequence means changes in this bases is called, if there occurs some changes, is called mutation. Mutation will occur. So what happens? This base sequence, ultimately due to mutation, what will occur? Some new characters may develop. Some new characters may created due to mutation, which is not found in parent type. Parent type में जो कैरेक्टर्स नहीं था वो सडनली कुछ वजह की म्यूटेशन की वजह से सीक्वेंस में चेंजेस आ गया और सम न्यू कैरेक्टर्स डेवलप्ड विच वर नॉट फाउंड इन द पेरेंट टाइप. सो म्यूटेशन ब्रीडिंग इज पॉसिबल टू इंड्यूस करके म्यूटेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियली और केमिकली बाय गामा रेडिएशन, okay, or any other types of radiation. For example, we will take in moong dal, moong bean mutation breeding was due to was done to prevent from yellow mosaic virus, yellow mosaic virus, and another disease, powdery mildew. So in मूंग बीन म्यूटेशन ब्रीडिंग किया था मूंग बीन प्लान में, फॉर व्हाट? to prevent from yellow mosaic virus and powdery mildew diseases. So in the next class we will discuss about plant breeding for how we can breed the plants against the insect pest. This is all about the plant breed for disease resistance, and in next class we will discuss about the resistance against insect pest.